Hello students, good morning. Let's start with the chapter today, unit vector. So keep on writing, listen very carefully. We're going to start with unit vector. Friends, what is unit vector? Unit means you know one. The vector whose magnitude is one and it is having a specific direction is known as unit vector. Right? The vector, this is a vector, this is a vector whose magnitude is one. Is one that means unit direction and a specific direction. And a specific direction. Students, representation of vector पे आपको पता होगा. Let's say I'm writing here a vector. That means it is having some magnitude. It is having some magnitude along with some angle theta. This is nothing but magnitude, and this is student direction. Direction means the angle made. Usually we take angle made with positive x-axis, in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. So let I'm representing a vector over here. Let this is positive x-axis. This is y. Coordinate system. You may take minus x, minus y. Let I will be writing a vector here a. It is making an angle theta. That means a vector is having some magnitude a and some angle theta. This is the angle made with positive x-axis in anti-clockwise direction. This is the representation of a vector. Since I want to keep the direction of the vector same, but I want to make its magnitude 1. Are you getting my point? I want to keep the direction of this vector same, but I want to make its magnitude 1. So how it could be done? Since let I am writing here a theta. A theta is nothing but a vector. Let in this a theta vector, I am dividing the only magnitude part. The only magnitude part of the vector. This is the magnitude kept in mode. So student, magnitude of a divided by magnitude of a will be how much? 1. Okay. So only by dividing the magnitude with the vector, we're able to get, we're able to make the magnitude 1, but the direction is remaining same, isn't it? So that means I could write like this: a vector by magnitude of a is equal to a cap. That means student, this a cap, this is written as a cap or hat. This is the unit vector. This is the unit vector along a. This is the unit vector along. That means a vector जो था पहले से उसका magnitude अभी 1 हो गया, but direction जैसा था वैसा हो गया. So the unit vector is having direction. It could be having direction in any, direction. That means students, we are going to represent the unit vector. So just write. Friends, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं vector and it is अब मैंने a बताया तो उसको a क्या write unit vector in the direction of a. Right, unit vector तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं unit vector, right, unit vector along the direction, in the direction of a. Unit vector in the direction of a. Unit vector in the direction of a is represented by students a cap, is represented by a cap. So that is equal to nothing but vector a by magnitude of a vector. Unit vector means vector by magnitude of the vector. So overall we can write unit vector means
unit vector means vector divided by magnitude of the vector. Vector divided by magnitude of the vector. That means अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं इसको तो इट कुड बी रिटन ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप. स्टूडेंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर स्केलर क्वांटिटी को मैं एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये वेक्टर बन जा रहा है. इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे आगे. फ्रेंड्स अभी हम ये करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट्स नो अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स. स्टैंडर्ड या बॉक्स पे रखो इस फार्मूला को. राइट. स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर standard unit vectors in a coordinate system. Standard unit vector in a coordinate system. Friends, अगर हम यहाँ पर let I will be taking here x axis and I will be taking here y axis and I will be taking here z axis. So in vector, the frame there are two unit vectors along x. That is unit vector we usually representing most of the time. That is I cap, and along y that is j cap, and along z that is k cap. So these are used to indicate x, y, and z directions. And these three unit vectors are perpendicular to each other, students. So in vector analysis along x, y, z direction, standard unit vectors are defined. These are denoted by I cap, j cap, and k cap. So these are denoted by, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो. In vector analysis along x, y, and z direction, standard unit vector are defined. Standard unit vector are defined. Standard unit vector are defined. These are denoted by I cap, j cap, and k cap respectively. So here we can also, friends, any vector in positive x-axis direction can be written as its magnitude multiplied by I cap, and in negative x-axis the direction is multiplied by minus I cap. That means if I'll be taking a coordinate system here, let this is positive x and this is negative x, and this is y and this is minus y. So if here I'll be taking as I cap, here I'll be taking it minus I cap, and here if I'll be taking a j cap, here I'll be taking as k cap. Understood, students? Let parallel to this, I am making a vector like this. So it is towards it is towards negative x-axis. So I let the magnitude is minus 2I cap. Let I am making a vector like this. It is towards positive x-axis, so 3I cap. Let I'll be making a vector like this. It is towards the negative y-axis, so it could be written minus 4 let j cap. Let I'll be making a vector like this. So it is 1.5 j cap because it is positive axis. So like that, a line perpendicular to xy plane and passing through z-axis, origin is called z-axis. The unit vector along z-axis is denoted by k cap. And the z
We can also represent the unit vector along. When this is the basic idea about z vector, and you can friends, we can represent position using a standard unit vector. We can also represent position vector using standard unit vector. We can also write here position vector using standard unit vector, using standard unit vector. It means that I'll be representing a two-dimensional coordinate system. Let this is x coordinate and this is y coordinate, and I took a point this let this is the point P, and it is having the point as 5 and 4. That means it is having a y displacement from the origin as 4, and it is having a x displacement as 5. Friend, this could be the vector along Rx, and this could be the vector along Ry, and this is same, so this will be also Ry vector. So if I'll be representing the position vector of point P, if I'll be representing the position vector of point P, it could be written as 5i cap plus 4j. That means it has moved 5 units along x-axis and 4 units along z-axis. So similarly, in 3-dimensional system, I could add something like z, and I could write something k cap. That means it has moved along this much unit along z-axis. So next, students, to get the detailed analysis, let's to know its application. Let's go to students components of a vector. Just keep heading components of a vector. So we'll go for components of a vector. We'll go for components of a vector. फ्रेंड्स, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स. व्हीकल की ये सारे कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स. तो कंपोनेंट्स को हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ ए वेक्टर. सो लेट्स नो स्टूडेंट्स that I'm writing a vector x, which is the summation of y vector, sum of y vector and z vector. That means this y and z both are known as components of vector x. These are the parts of vector x. So you could say these are the components of vector x. These are the component of vector. Friends, in triangle law of vector addition, triangle law of vector addition. So if this is the vector, triangle law of vector addition, if this is the vector A and this is the vector V, they are having the same direction A to B. This is the tail head A to B. So the summation of these both, the resultant vector will be represented by the third vector, that is C vector, that is equal to the resultant vector of A and B, which is directed in opposite direction. Friends, you could see this is C is equal to A plus B. And I could write A and B are the components of C vector. यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं A and B are the components of A and B are the components of C vector. Let's polygon law of vector addition. Let this is A vector, this is B vector, and let this is C vector. All are in one direction. Let it is D vector. And let's student the closing vector is this, and it is the resultant vector that is in opposite direction. Let it is E vector. And student, I could write here in polygon law of vector addition, E vector is equal to A vector plus B vector plus C vector plus D vector. So this A, B, C, and D all are the parts. So I could also write
This A, B, C, D are the components of E. Also write A, B, C, D are all are components of, are the parts of, or are the components of E vector. The student, magnitude of a component may be more than the magnitude of the main vector. कोई भी एक component का जो magnitude है वो ज्यादा हो सकता है तो magnitude of the main vector. तो main vector उसका जो magnitude है component may be more than the magnitude of the main vector. हो सकता है ऐसा भी, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो equal to फिर less than. Just note it down. फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर? व्हाट इज रेक्टेंगुलर, what is rectangular components, what is rectangular components of a vector? It's good to understand what is the rectangular components of a vector. Rectangular components of a vector, students, right? When there are two components of a vector, right? There are when there are two components of a vector, when there are two components, when there are two components of a vector, when there are two components of a vector, and if these are, and if these are two components of a vector and these are perpendicular to each other, these are perpendicular to each other, these are perpendicular to each other, then these are called rectangular components of the vector. Then these are called, rectangular components of the vector. These are called rectangular, these are called rectangular components of a vector. These are called rectangular components of a vector. But see students, that this is the A vector and the V vector also like this, and this is 90 degree, and the closing side will be C vector. Here I can write from triangle law vector addition, C vector is equal to A vector plus B vector. So A and B here, तो components ही है, but as both are perpendicular to एक special type के अंदर आ जाते हैं rectangular components. So I could write A and B are rectangular components of C. A and B are rectangular components of C. Right? A and B are rectangular components of C vector. Friends, if I'll take this angle as theta, I'll be taking this angle as theta. You know, if this is theta, this will be perpendicular, this will be base, this will be perpendicular, this will be base, and this will be hypotenuse. This will be the perpendicular, you know, trigonometry. This is the base, and this is the hypotenuse. Friends, if I'll go for sine theta here, if I'll be going for sine theta, you know, B by H, that will be B vector by C vector. So अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो V vector will be equal to how much? C sin theta. और स्टूडेंट मैं यहाँ पर cos theta की बात करूं, cos theta is equal to B by H, you know. So B is A here, base by hypotenuse, that is A by C. So if I'll be writing here A vector, so I could write A vector is equal to B vector, sorry, C vector into cos theta. That means अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो थोड़ी देर पहले हम जैसे पॉइंट पी ले रहे थे, ये थे, लेट दिस इज द distance and this is a point and this is making an angle theta, so we're just using, so in x axis and this is y axis, so this distance could be rx, आपको पता है कि ये y है, so that could also be ry.
तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं थीटा ले लूँ और उसकी उसी तरह मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, सो आई कुड राइट आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। थीटा ले लो, इसको 90 डिग्री ले लो और इसको आप कुछ भी वेक्टर ले लो, आर यू टेक इज दैट आर वेक्टर, then you can write rx is equal to r cos theta, and I could write ry is equal to r sin theta. This is the way how we could represent. This is very important, student, because in many of the cases, we are going to find the components of many vectors. So I think let's do some examples so that you could understand. Correct. It's rectangular coordinates, rectangular component के बारे में थोड़ा idea हुआ. अगर मैं यहाँ पर आपको और एक we'll be doing very so many numericals examples to understand this. Okay, this is a two-dimensional system, and later I'll be taking the magnitude as a. And you know, this distance will be how much? This will be how much? A x component. So that is horizontal component. We also say that is a cos theta. If this is theta, and student, this is a y. You know this distance. This is a y is equal to a sin theta. Friends, ये जो x component of x component of a is ax cos theta, and y component of a is a sin theta. Friends, ये जो parallel to x axis is x component, and parallel to y axis is y component, and theta is the angle of a in with the positive x axis. ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a vector can be written as like ax I cap plus ay j cap. Simply also, student, we can also write that is equal to a cos theta, ax is equal to a cos theta I cap plus a sin theta j cap, a sin theta j. Horizontal component parallel to x axis horizontal, perpendicular to x axis that is vertical along y is vertical. Could sometimes horizontal component vertical component की तरह हम भी बात करेंगे. Actually, ax ay can be negative or positive according to the direction of component. मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये पॉजिटिव है, अगर मैं इस साइड पे लेता तो वो नेगेटिव हो जाता. केसेस अगर मैं कुछ डायग्राम्स अगर आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग डिटरमाइन कर सको कि इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. अगर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताया और आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइंड द वेक्टर्स, हमें यहाँ पर वेक्टर्स निकालना है. फाइंड द वेक्टर्स, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, मेरे साथ आप लिखते रहो. लेट द डायग्राम इज गिवन लाइक दिस, यू नो दिस इज और this is 1 and this is students 1. This magnitude is 1, this magnitude is 1. So this is the required vector. If I'll be saying you represent the a vector, so what will be writing students? A vector, what you will write about a vector? देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव x पे है, that means minus 1 की जगह पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ. So I could write this at minus I cap, और ये जो y के along है j के, that means I could write it along j cap. ठीक है स्टूडेंट्स? और ठीक मैंने और एक केस आपको बताया लाइक दिस, इट इज अलोंग x एंड इट इज अलोंग माइनस y. तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने 3 ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड मैंने 2 ले लिया. अब कुछ भी मान के चलो ये मेरा b वेक्टर है एंड दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज 2. तो रिप्रेजेंट दिस b वेक्टर, हाउ इट कुड बी रिटन स्टूडेंट्स? 3 अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस तो i क्या, नेगेटिव y एक्सिस पे तो माइनस 2 j क्या. और लेट इस तरह मैंने और एक वेक्टर बनाया. We'll be getting acquainted. So first you are learning, so it might be a little bit. You could see this video again to understand. ये 2 है, ये 1 है. मान के चलो मैंने उसको c वेक्टर ले लिया and this distance 0. this c वेक्टर, तो c वेक्टर ये नेगेटिव y पे है, नेगेटिव एक्सिस पे है. तो c वेक्टर could be written as minus 2 I cap minus j k cap. अंडरस्टूड फ्रेंड? आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो, फिर नोट्स लिख के फिर आप आगे जा सकते हो. फ्रेंड्स, एक बात है मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा. जैसे आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे यू नो दिस इज दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सॉरी दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो स्टूडेंट दिस इज हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर. स्टूडेंट्स यू नो इट. So if component of a are ax and ay, then magnitude of a, यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके आप यहाँ पर लिख सकते हो. Just make a note here, then we'll go to the next phase. If components, आप लिख सकते हो components
components of A are AX and AY, then since the magnitude of A can be equal to AX का square plus AY का square का root over. अगर 3 डायमेंशन होगा तो AX, AY plus AZ का स्क्वायर भी कर सकते हैं. So let's do some cases of resolving the components. Let's do some cases for resolving the components. Let's do some examples यहाँ पर करेंगे जो कि हम पता चल जाएगा कि कैसे रिजॉल्व किया जाता है. ये देखिए, तो चलो करेंगे resolve into components. Resolve into. Let's do some examples. Then we'll be clarified about how to resolve a component. Since मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को दिखा दिया x और y के बीच में, और मैंने ऐसा बता दिया this is 5 and this angle is 60. Definitely student ये 60 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको क्या, there will be a component along this. तो मैं यहाँ से perpendicular ड्रा करूँ और यहाँ से perpendicular ड्रा करूँ. This length will be how much to it? So this vector along x axis 5 along x, that is 5 cos 60 डिग्री. रिप्रेजेंट करते वक्त तो मैं उसको -5 cos 60 डिग्री, नो प्रॉब्लम. और यहाँ पर 5 sin 60 डिग्री. ये एक केस हुआ. सेकेंड केस पे मान के चलो मैंने और एक एग्जांपल बताया, आप सारे एग्जांपल को आराम से देख सकते हो. लेट मैंने इस कोऑर्डिनेट पे लिया, तो रिप्रेजेंट करते वक्त प्लस माइनस कैसे लेना है दैट यू नो, बट अभी हम बस रिजल्व करेंगे. ये 6 है और दिस एंगल इज गिवन 45. जो एंगल को लगा रहता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. इफ आई टेक दिस वन, इफ आई टेक दिस वन, एक्स एक्सिस, तो ये 6 है और ये 45 है. तो नो डाउट स्टूडेंट, जो एंगल को हमेशा टच करता है 6 cos 45. कुछ कुछ केसेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला, और उसको ठीक परपेंडिकुलर 6 sin 45. ये केस है. फिर चलो, हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है वो हमेशा वर्टिकली ही लिया जाए. इस तरह भी मैं ले सकता हूँ. आई कुड टेक द एक्सिस लाइक दिस, इसको मैं एक्स, इसको माइनस एक्स, और इसको वाई, इसको माइनस वाई ले सकता हूँ. डजंट मैटर. बट यहाँ पर मुझे क्वेश्चन पे ऐसा दिया गया है कि लाइक दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर and this is 10 and this is 20 given 30 degree. तो अगर मैं इसको रिजल्व करूं, if I will be resolving this one, then in what way I will resolve? तो अगर मैं इसको रिजल्व करूं like that, these two are perpendicular to each other, और यहाँ पर ये जो एंगल है मुझे 30 दिया गया है, तो अगर ये 10 है स्टूडेंट्स, तो along this क्या होगा कंपोनेंट, 10 cos 30 डिग्री. और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो उसको जो परपेंडिकुलर है, जो will be along this direction, and this will be 10 sin. ग्रेजुअली हम लॉज ऑफ मोशन पे या आगे जाके जब बहुत सारे रिजल्व का केसेस बनाएंगे, that could be understood better. Friends, the components can be resolved along any two perpendicular axes. ऐसा नहीं कि हमेशा x और y, ये दो perpendicular axis भी है. These are two. ये भी एक perpendicular axis है, ये भी एक perpendicular axis है, और केसेस में इसको भी करना पड़ेगा. इसके एप्लीकेशन भी आगे है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ नोट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं. The components can be resolved. The components, right? The components can be resolved. The components can be resolved along any two perpendicular axes. Along any two perpendicular axes. They may not be horizontal and vertical always. जरूर नहीं कि हमेशा vertical और horizontal हो. जो लास्ट केस में हम देखे, they may not be horizontal and vertical always. They may not be horizontal and vertical always. They may not be horizontal and vertical always. फ्रेंड्स, और एक चीज है, आप अभी ऑब्जर्व कीजिए, जो थीटा को लगता है दैट इज द कोसाइन, तो उसको परपेंडिकुलर होता है. ऑब्जर्व दैट, सारे पे आप एक चीज कॉमन है. ऑब्जर्व दैट द गिवन एंगल
so that the given angle always comes between the given angle always comes between given vector given vector and its cosine component and its cosine component. So just write it down. फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को. Let's see. I'll be doing an example here. Then I'll be giving a detailed clarification. इस तरह बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं. इसके ऊपर हम करेंगे ये सारे. फिर ऐसा दिया गया एक वेक्टर इस तरह 10 दे दिया गया और ये एंगल को 30 दे दिया और एक वेक्टर को इस तरह 8 दे दिया गया. दिस एंगल इज 6. नाउ स्टूडेंट उसमें दिया हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स. फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर. फ्रेंड्स अगर मैं उसका सारे वेक्टर्स को अगर मैं रिजल्व कर दूं, इसका अगर मैं इफ आई विल बी रिजल्विंग दिस वन, आप अच्छी तरह से देख सकते हो. दिस इज 10 एंड दिस इज 30. सो एक वेक्टर तो इस तरफ आ जाएगा 10 cos 30 और ये 8 है ये 60 है तो और भी एक वेक्टर आ जाएगा 8 cos 60. करेक्ट. अगर ये 10 cos 30 है तो उसको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा 10 sin 30. 10 sin 30 और ये जो 8 cos 60 है इस तरफ तो इसका परपेंडिकुलर वाला क्या बन जाएगा 8 sin 60. 8 sin 60. 8 sin 60. अगर मैं यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंट कर दूं तो एक वेक्टर हो गया 8 cos 60 और एक हो गया 10 cos 30 और यहाँ पर एक हो गया 10 sin 30 डिग्री जो ऊपर वाले कंपोनेंट पे और फिर नीचे की तरफ हो गया 8 sin 60 डिग्री. तो अगर मैं पूरा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इफ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द टोटल देन आई कुड राइट along x पे क्या हुआ दोनों सेम डायरेक्शन पे तो स्टूडेंट आर हो जाएगा तो r along x इज टोटल. अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं I'll be saying about x component so that is nothing but 8 cos 60 plus 10 cos 30. You know cos 60 is equal to 1 by 2 and cos 30 is root 3 by 2. तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 4 plus 5 root 3 by 2 है तो 5 root 3. So the net that is towards positive x-axis. Towards positive x-axis. क्वेश्चन देखो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री. सो दे विल बी सब्सट्रैक्टेड. So if I'll be writing ry that is y component so I can write that is negative है दोनों तो it is 8 sin 60 बड़ा है या फिर 10 sin 30 बड़ा है तो उसमें से ग्रेटेड से लोअर को ही सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर if I'll be taking the negative sign then 8 sin 60 minus 10 sin 30. तो sin 60 is 1 by 2 तो सर ऊपर से नीचे जो ग्रेटर है उसको आप पूरा यहाँ पर लिख सकते हो 8 into sin 60 कितना हुआ लिख सकते हो sin 60 is how much 3 by 2 so that is how much 4 root 3 हो गया ये. स्टूडेंट यहाँ पर आप देखो 10 sin 30 10 into 1 by 2 sin 30 कितना है that is 5 तो 4 वो 1.7 definitely 4 root 3 is greater so the value will be 4 root 3 minus 5 और ये किस तरफ होगा 4 root 3 का डायरेक्शन जिस तरफ it will be in negative x axis के होगा so that will be 4 root 3 minus 5 that is towards negative y axis. ये बड़ा है तो net will be in this direction.
तो अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं यहाँ पर, सो इफ आई विल बी ड्राइंग द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर, student, it will be rx component like this and ry component. The resultant will be like this. तो हमें मिल गया. So if I will be going the magnitude of r vector, थोड़ी देर पहले जैसे हम देखे, तो rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर का रूट ओवर ऐसे कर सकते हैं. तो अगर मैं पूरा को डाल के सॉल्व करूं, so it will be about 241 units. फ्रेंड्स, अगर ये जो वेक्टर कितना एंगल बनाया, हाउ मच एंगल इट मेड, सो दैट इज थीटा. तो अगर मैं इसको tan थीटा ले लूं, इफ आई विल बी टेकिंग इट एज tan थीटा, यू नो tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज थीटा, दिस इज base and this is perpendicular, you know tan theta is equal to p by b. So that means यहाँ पर tan theta is equal to how much, ry by rx. और आपको ऑलरेडी मिल गया है ry, कितना आया था ry, 4√3 minus 5 divided by 4 plus 5. That means जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कौन सा डायरेक्शन पे होगा, ठीक है. That is 4√3 minus 5 by 4√3 plus 5. That is tan theta. Guys, is equal to आप इन्वर्स करके बना सकते. This is the case. We'll be doing very so much numericals like this, and the application will be understood by with you with due course of time. So just see the video again and again, और आप थोड़ा समझने की कोशिश करो. जहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग डाउट्स करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं. So thank you this much for this.